स्कार्सिटी डेफिनेशन, स्कार्सिटी काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में. इट इज द रूट कॉज, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो प्रॉब्लम्स ही अराइज ना होती. ऐसा क्यों? स्कार्सिटी है तभी तो आपको चॉइस लेनी है. आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक अ चॉइस. अगर रिसोर्सेज स्केर्स ही ना होते, अगर दिन में लिमिटेड आवर्स ही ना होते तो दिन ही खत्म ना होता. अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स ना होते तो आपके अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो पाती, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर स्केर्स एंड दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. आपके पास टाइम लिमिटेड है, अब उस टाइम में या तो आप पढ़ लो या मस्ती कर लो, दोनों करनी साथ साथ मुश्किल है. तो कहीं बैलेंस मेंटेन होता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक अ चॉइस. अभी आप मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, और जब आप मस्ती कर रहे हो तब आप पढ़ नहीं सकते. यू हैव टू मेक अ चॉइस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी. अनलिमिटेड टाइम होता तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी. टाइम लिमिटेशन है, कल तक हमें ये होमवर्क करना है, वी हैव टू मेक अ चॉइस. या तो हम घूमने जा सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं. हम घूमने जाएंगे. स्कैरसिटी डेफिनेशन, according to Professor Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Ends or wants. How do you satisfy your wants? With the scarce means. Professor Robbins ने क्या बोला? Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends, what you eventually want to do, with the limited resources which you have, and these resources have alternative uses. So this is the closest to what we have already done. Microeconomics में भी हमने economics की definition पढ़ी थी. तो study of human behavior, how he earns his means of living. तो consumer के point of view से कुछ definition थी, producer satisfaction of his wants. तो पहुंच रहे हैं वहां तक हम. Scarcity definition of economics was given by Robbins in his book, an essay on the nature and significance of economic science, published in 1932. Scarcity definition is based on the following fundamental characteristics of human existence, which gives rise to economic problem. So scarcity is the root cause of economic problem. Economic problem आपने नहीं सुनी अभी, जिन्होंने माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर नहीं करा था. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है what to produce, how to produce, for whom to produce. क्या बनाएं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. गुड्स हम कंजम्पशन गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, वॉर गुड्स बनाएं या कंजम्पशन गुड्स बनाएं. वी हैव टू मेक अ चॉइस. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी. व्हाट इज द रीजन? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. Resources to satisfy these wants are limited. These resources have alternative uses. तो वहां आपने पढ़ा था ना, what are the causes? What are the causes of central problems of an economy? Same है. Human wants are unlimited. Man has unlimited wants or ends. तो ends आपकी wants को बोला जाता है ना? Relationship between ends, what do you want, and the means. आपके पास है क्या? Resources उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, हाउ यू यूज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स. They can never be fully satisfied. No sooner a want is satisfied, a new want emerges. Scarcity of resources. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Scarcity is universal and applies to all individuals, organizations and countries. Scarcity यूएस में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी scarcity होगी रिसोर्सेज की, अनलिमिटेड रिसोर्स. पड़ रही है शॉर्टेज अब वहां पे गैस की, ऑयल की, तो scarcity है ना, तो कर लो लड़ाइयां. और resources are not only scarce but they can also be put to various uses. So what are the characteristics? Unlimited wants. Resources to satisfy these wants are scarce. These resources have alternative uses. अगर alternative use ही ना होता तो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होती.
बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन टू मेक अ चॉइस। आपके पास अब ये स्केल है, इसके क्या मल्टीपल यूजेस हैं? ये पिटाई के भी काम आता है, सिर्फ लाइंस खींचने का काम नहीं आता तो नहीं है, तो मतलब आएगा कभी काम, बट क्या इसके मल्टीपल यूजेस हैं? नहीं है। तो क्या कोई चॉइस है? नहीं। कभी टूटे हुए स्केल दिखे तो समझ जाना कि वो कैसे टूटे होंगे। कैसे टूटे होंगे? पता नहीं, सर गिर गए होंगे किसी से लाइन खींचते खींचते और टूट गया हो। तो चॉइस आती कहां पे है? चॉइस आती है जब ऑल्टरनेटिव यूजेस हो। 7 सेट्स निकाल देना। जैसे मनी, मनी के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या तो आप कपड़े खरीद लो, या जूते खरीद लो, या कुछ खाने के लिए ले लो, घर ले लो, कुछ ले लो। जब आपने लगा दिया तो अपने पैसे खत्म, ये हमारे बजट के बाहर हो गया है। तो क्योंकि स्कैरसिटी है, टाइम एक बहुत बड़ा लिमिटेड रिसोर्स है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही तब है जब रिसोर्सेज स्कैर्स हो और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन as per Professor Lionel Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and the scarce means to satisfy these ones which have alternative uses. According to Robbins, these fundamental characteristics are found everywhere. No economy can escape from these characteristics. In all countries and at all times. Economics deals with how the scarce resources of the society would be allocated to the satisfaction of different wants. So, क्या थी ये third definition? Scarcity definition of economics by Professor Lionel Robbins. Continue करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा और content है। Scarcity definition कर रहे थे by Professor Lionel Robbins. कह रहे उनकी भी डेट ऑफ बर्थ देख लो। Okay, prominent member of economics department at London School of Economics. He is known for his leadership at LSE, his proposed definition of economics, and for his instrumental efforts in shifting Anglo-Saxon economics from its Martian direction. He is famous for the quote, "Human want what they can't have." Basically, human wants are unlimited. मतलब जो मिल गया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। Scarcity affects our daily life. Definitely, we face various forms of scarcity in our daily life. The long queues at railway reservation counters because the tickets are limited. तभी इतनी लाइन लगी हुई है। Crowded buses because the seats are limited. Trains, shortage of essential commodities. इतनी लंबी लाइन लगी होती है कहीं कहीं पानी की, again because the resources are scarce, limited resources हैं। Increasing prices of petrol, किसी भी चीज का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसकी शॉर्टेज होती है। Vegetables or pulses are all manifestations of scarcity. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. Scarcity, चलो आई गया, खुशी की बात है, माइक्रो में भी था, यहाँ भी है। Scarcity is the root cause of all economic problems. Scarcity refers to a situation when resources are not sufficient, not enough to satisfy all wants of its people. Scarcity is pervasive and is a fact of economic life for each and every individual. It is present everywhere in the whole world. अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो स्कैर्सिटी, scarcity of resources is the basic reason for existence of economic problems in all economies. There would have been no economic problem if the resources were not scarce. Why do we study? अब scarcity से एक कहानी बन गई, मतलब एक क्वेश्चन था कि why is it that water is cheap and diamonds are costly? जबकि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। वाटर इज चीप and diamonds are costly. Comment. Because of scarcity, diamonds are scarce, water is available in abundance. So again it is because of scarce. अभी तो मैंने इसके साथ ही वो क्वेश्चन पूछ लिया तो इमीडिएटली आंसर निकल गया।
बट रैंडमली अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि why are diamonds costlier and water is cheap, although water is a necessity and diamonds are not a necessity, so why is it that they are costlier? Because of scarcity. Water is available in abundance as compared to diamonds. क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स? Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy and helps in analyzing problems and policies of the government. However, the main reason for the study of economics can be simplified to a single word: scarcity. Why do we study economics? Economics is about economizing the resources. What do you mean by economizing the resources? Anyone? Try करेंगे. Economization of resources. Economizing the resources. इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई भी बता सकता है? कोई बता सकता है? So can I try? एक सेकंड, एक एक करके. कौन ट्राई करना चाहता है? ऋतिका एंड वान्या. तो पहले वान्या. The planning of resources so that they can be used more efficiently. Okay. Ritika. So when we use the scarce resources in a way that they are useful in developing the economy. Okay. Similar. Vanya said efficient utilization of resources, and you said using the resources in such a manner that they are more suitable for the economic growth. अभी यहीं पे रख दो. तो मैं अगर इसको क्लोज करूं, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources. Optimum utilization of resources मतलब using the resources in the most efficient manner. Optimum utilization of resources. So economics is the study of optimum utilization of resources. Okay? समझ आई बात? Yes, sir. Why do we need to use the resources in the most optimum manner or in the most efficient manner? Because of scarcity. In other words, human wants are greater than the available resources. So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. Hence, economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity. तो scarcity definition किसने दी? प्रोफेसर लायनल रॉबर्ट्स. 3 डेफिनेशन हो गई. सबसे पहली वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन बाय Alfred Marshall. So he focused more on welfare, study of a man, whereas Adam Smith was more interested in increasing the GDP of nations, wealth of nations. So wealth definition by Adam Smith, welfare definition by Alfred Marshall, and third we did scarcity definition by Lionel Robbins.